ladies and gentlemen, we begin the launching ceremony today with Ganesh Vandana. चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गान सुखाय गानमत्ताय गान सुखमनसे गुरु पूजिताय गुरु दैवताय गुरुस्थायिने गुरु विक्रमाय गुह्यप्रभराय गुरवे गुणगुरवे गुरु दैत्यगणा क्षेत्रे गुरु धर्म सदाराध्याय गुरु पुत्र परित्राते गुरु पाखंड खंडकाया गीतगानाय गीतकर्ताय गीतकर्ताय धीमहि भूतकुलकाय छन्दमत्ताय भोजय प्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि सतीशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि सतीशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. I now request Commodore P.R. Hari, Indian Navy retired Chairman and Managing Director GRSE, to the podium for his welcome address. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, Honorable Chief Minister of West Bengal, Madam Mamata Banerjee, Honorable Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, Chief of the Naval Staff, Admiral R. Harikumar, flag officers from the Indian Armed Forces, senior dignitaries from the center and state administration, friends from the media, ladies and gentlemen. At the outset, I am humbled and indeed honored with this august audience, with so many luminaries. For us, every launch is special. Launch symbolizes
the birth of a ship. But this launch is unique. This beautiful warship in front of you is singularly lucky to have the honor of being named and launched at the hands of none other than the Honorable President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. Therefore, I would like to term this launch as the mother of all warship launches. Thank you, ma'am, for honoring us with your presence. It is also our proud privilege to have the Honorable Governor of West Bengal, the Honorable Chief Minister of West Bengal, the Honorable Raksha Rajya Mantri, the Chief of the Naval Staff, two cabinet ministers from the state of West Bengal, and so many dignitaries here. GRSA has been in the forefront of the Make in India efforts of the nation. Starting in 1960, we delivered the first warship, indigenous warship of the nation, just 1 year after getting adopted under the umbrella of Ministry of Defense in 1961, INS Ajay. And from then, we have grown into a mature, modern, and future-ready shipyard. What is special about GRSC is that we have the capability to deliver platforms as small as 2.15 meter, 50 kilogram weighing, unmanned underwater vehicle to most advanced, complex, weapon-intensive warships. What is also unique about this shipyard is our product diversity. In addition to warship building and commercial shipbuilding and ship repairs, we also have strong business verticals in the segments of portable steel bridges, deck machinery, marine diesel engines, naval armament, and autonomous and green energy platforms. This warship in front of you is a third in a series of 3 warships that GRSC is constructing for the Indian Navy, the P-17 Alpha project. The 2 ships earlier, INS Himgiri and Dunagiri, have been launched and are currently undergoing the outfitting phase of construction. INS Vindhyagiri, as she shall be named a few moments from now by our Honorable President, is a reincarnation of another INS Vindhyagiri who did human service to the nation from 1981 to 2012. For making this launch a reality, a launch with over 37% physical progress of construction, over 60% in terms of displacement as compared to the light ship displacement, I must place on record our appreciation to all the stakeholders, the Indian Navy, the Warship Design Bureau, the Warship Overseeing Team Kolkata, the professional directorates of the Naval Headquarters, our industry partners, the OEMs, and last but not the least, Team GRSC, all the stakeholders from GRSC, the officers, the supervisors, the operatives, support staff, and our subcontracted workforce. Let me place on record my deep gratitude to the Honorable President for gracing this occasion and making it a historical event that shall go down in the annals of warship building history. Let me also thank the Honorable Governor of West Bengal, the Honorable Chief Minister of West Bengal, the Honorable Raksha Rajya Mantri, the Chief of the Naval Staff, and all those who are present here for making this occasion something that we shall cherish forever. Thank you. Jai Hind. Ladies and gentlemen, we are now commencing the traditional part of the launching ceremony. We start with invocation in Sanskrit, followed by English. अदिति देवरदितरंतरिक्षम धितिर्माता सपिता सपुत्रे विश्वदेवाय अदिति पंचजना अदिति जमीतिर्जनित्यम महिमूषु मात्रम सुव्रतानामत्स्य पत्नमवेशे हवामहे तविछात्रामजरन्त मरुचु ससमणिमर्दितं सत्रामाणं पृथ्वी घामणेहं सुषामणिमर्दितं सुप्रणोतिमं दैवी नावं स्वरित्रानाभागसे अस्त्रावस्तुमा हेमा स्वस्तये वजस्यानुप्रस्वे महीमधीर्ति नाम वत्सा करामहे यस्या उपस्या उर्वन्तरिक्षं सान हाम्र त्रिराचनु याचत. Thou art the heavens, O Aditi, and thou art the unfathomable space. By thee we art measured and protected, and thou art us, thy children. Thou art all the gods in heaven. Thou art the 5 nations. Thou art our present and future. Thou, the measure of goodness,
Thou, the mistress of righteousness, to thee we tender our offering. Far flung are thy domains, ever widening, ever prospering, happy, O Aditi, and blessed in thy guidance. With thy blessings we embark on this ship that rides well the waves, so broad in beam and spacious, comfortable, resplendent. Blessed are her courses, her rudder strong, faultless in construction, her bilges dry. So with the words of praise to thee, we embark on this venture, that prosperity may flow with thy thrice blessed protection, O Aditi, who art thyself the spirit of the earth and the space and the heavens. देवियों और सज्जनों, आप देख सकते हैं कि कुमकुम लगाए जाने तथा पोत पर मालार्पण की पारंपरिक रस्म प्रगति पे है। The sequence of the events being followed at the puja area includes the application of kumkum, garlanding of the ship by the Honorable President of India, application of kumkum in progress, ladies and gentlemen, by the Honorable President of India. भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा पोत पर कुमकुम लगाया जा रहा है। देवियों और सज्जनों, पूजा के दौरान निभाई जाने वाली रस्मों का प्रारंभ पोत पर कुमकुम लगाए जाने के साथ प्रारंभ हो चुका है। Garlanding of the ship by the Honorable President of India. भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा पोत पर मालार्पण। Garlanding of the ship by the Honorable Chief Minister of India, West Bengal. पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा पोत पर मालार्पण। Garlanding by the Honorable Governor of West Bengal. पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पोत पर मालार्पण। Our friends from the media in all their excitement. May we request the dignitaries to kindly allow us to capture this historic moment in a photograph with this majestic ship in the background. हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों के साथ आज के इस ऐतिहासिक क्षण को पोत की पृष्ठभूमि के साथ तस्वीरों में कैद करने की अनुमति प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वर्णिम पल हैं जिन्हें तस्वीरों के माध्यम से सहेज कर रखा जाएगा।
May we request the dignitaries to please move back towards the dais. Ladies and gentlemen, may I now request the Honorable President of India to perform the naming ceremony of the ship. We shall witness the naming ceremony in a short while from now. मैं इस पद का नाम भारतीय नौसेना पद विंध्यागिरी रखती हूँ। इस पद और इसके सभी नौसैनिकों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। I name this ship Indian Naval Ship Vindhyagiri. May good fortune attend her and all those who sail in her. May I now request the Honorable President of India to unveil the name plaque by pressing the button. हमारी मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा नाम पट्टिका का अनावरण विंध्यागिरी. That was the unveiling of the name plaque, ladies and gentlemen, by the Honorable President of India, INS Vindhyagiri, as she will be called once she is delivered to our prestigious customer, Indian Navy. Request all dignitaries to come seats. This shall be followed by the speech by the Chief of Naval Staff. Request all to kindly be seated, please. हमारे मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें. सभी मंच अतिथियों से विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें. कार्यक्रम का अगला पड़ाव नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार का संबोधन है. मैं नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार से सादर अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस विशिष्ट जनसमूह को संबोधित करें. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Anand Bose ji, Honorable Chief Minister of West Bengal, Madam Mamta Banerjee ji, Honorable Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt ji, Senior State Government officials, Vice Admiral Pandit, CNC SFC, Lieutenant General Kalita,
GeoCNC East, Vice Admiral Rajesh Pendarkar, FOCNC East, Vice Admiral Kiran Deshmukh, CWPNA, our superstar of cricket, Sri Saurav Ganguly, former BCCI president and former captain of the Indian cricket team, Commodore P.R. Hari, CMD GRSC, friends from the media, officers, sailors, GRSC personnel, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. It's our great honor to have amongst us the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji, on this historic occasion of the launch of the third GRSA-built Project 17 Alpha ship. This mighty warship has inherited the name Vindhyagiri, which is a reincarnation of the erstwhile Leander class that was a proud bearer of the naval ensign from the 1980s till about 2012. In its previous avatar, Vindhyagiri was commissioned in July 1981, and during her 31 years of glorious service, she sailed extensively, kept her weapons combat ready, overcame all challenges that came her way, and proudly flew the Tiranga across the vast expanse of the ocean. As a ship of the Giri class, she was, like her sister ships, a symbol of national pride, marking the beginning of our determined journey to become a builder's navy, a strategic decision to design in-house and build ships indigenously. And the result, ladies and gentlemen, are there to be seen. We are now in the select group of nations that can build aircraft carriers. So it was the indigenous Giris, the state-of-the-art warships of their era, that gave us the confidence of we can and we will. And ladies and gentlemen, these multi-role frigates have been deployed in and beyond our areas of interest, performing missions and tasks across military, diplomatic, constabulary, and benign roles, all aligned with India's vision of Sagar, or security and growth for all in the region. Our expanding strategic reach, based on this vision, is the driver for the Navy's acquisition of assets with long sea legs and greater endurance. And in this endeavor, these ships, including Vindhyagiri being launched today, will prove to be versatile and powerful tools and support the larger national vision, as well as ensure safe, secure, and prosperous global commons for all. So while the Giris will contribute to nation's role of ensuring Rashtra ki Suraksha, these ships would also be the flag bearers of how the Navy also fulfills Rashtra ki Akanksha. So inspired by the success of the Giris, the Navy's in-house Warship Design Bureau has over the years designed nearly 90 ships of 19 different classes, a remarkable achievement of self-reliance and a feat to be justifiably proud of. So as a result, today, out of 63 ships and submarines under construction are being built in Indian shipyards. This simply means that Navy will invest thousands of crores in this sector, enhancing the capacity of our yards and capabilities of our yard and those employed in ancillary industries. So, Mananiya Rashtrapati ji, we have made an unequivocal commitment to be a fully Atmanirbhar Navy by 2047 to support the national vision of transforming into a developed nation in this Kartavya Kal. Supporting us in this endeavor is Garden Ridge Shipyard and Engineers Limited, a close and valued partner for the Indian Navy for decades. The shipyard has grown significantly over the years and has a good track record in building complex warships. This was underscored by the launch of Himgiri in December 20, Drunagiri in July 22, and within a short period of 12 months, today's launch of Vindhyagiri. I would like to congratulate the CMD, his staff, and particularly all workers of GRSC, the Director General Warship Design Bureau, Warship Production Superintendent, and the teams for a commendable effort in achieving this crucial milestone.
I am sure that the yard will strive forward and ensure timely commissioning of the ship and continue to support the Navy in delivering reliable, high quality and combat-worthy ships. I wish all of you the very best in this endeavor. I am confident that in the coming years, Vindhyagiri, once commissioned, would proudly fly the Indian flag across the oceans, proving not only to be a worthy ambassador of the country's shipbuilding prowess, but also that of our maritime might. Jai Hind, Shanno Varan. सर, आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का अगला पड़ाव स्मृति चिन्ह भेंट करने का है। May I now request our CMD to honor the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, with a memento. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से अब अनुरोध है कि वे पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। May I now request our CMD to honor the Honorable Chief Minister of West Bengal, Madam Mamata Banerjee, with a memento. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से अब अनुरोध है कि वे भारत के माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। May I now request our CMD to honor the Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, with a memento. देवियों और सज्जनों, पोत के जलावतरण की अंतिम गतिविधियां अपने प्रगति पे हैं। अब से कुछ ही पलों में इस पोत का जलावतरण होगा। We wait the final moments, the launch of Vindhyagiri in a short while from now, ladies and gentlemen. देवियों और सज्जनों, जीआरएससी को अतीत में कई कीर्तिमान रचने, कई अभिनव कार्यों को करने का गौरव हासिल हुआ है, परंतु आज भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से इस युद्धपोत के जलावतरण का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये उन सभी से कहीं बढ़कर कहीं ऊपर है। यह हम सभी के लिए वास्तव में बेहद गौरव के पल हैं कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रति हम हृदय से आभारी हो पा रहे हैं।
Ladies and gentlemen, the final moment has arrived. We shall witness the launch of Vindhyagiri by the Honorable President of India. She shall launch the ship by pressing the button. और अंततः वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा इस अद्भुत और विश्वसनीय पोत का जलावतरण किया जाएगा। Launching of a ship signifies culmination of first part of ship construction, which includes hull and superstructure. The ship looks truly majestic. देवियों और सज्जनों, किसी पोत का जलावतरण पोत निर्माण के प्रथम भाग के पूरा होने को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत हल एवं उसका सुपर स्ट्रक्चर शामिल है। ये पोत अपने भव्य रूप में है। आज का दिन जीआरएससी के सभी स्तर के कार्मिकों के लिए गौरवशाली दिन है। किसी पोत के जलावतरण के लिए अत्यधिक तकनीकी और डिजाइन सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। यह डिजाइनिंग, प्लानिंग, फैब्रिकेशन, उत्पादन, संस्थापन, क्रमबद्धता में महीनों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। The final moments. And there we go in a short while from now. Months of hard work has gone in to get the ship in its shape here today. Hold your breath, ladies and gentlemen, as we await the launch of the ship as she touches waters for the first time. महीनों की कड़ी मेहनत के बाद यह पोत आज अपने भव्य रूप में है और अब से कुछ ही पलों में इस पोत का जलावतरण भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा किया जा रहा है। And that is the launch of the third P7 in Alpha. अद्भुत, अविश्वसनीय। It's a matter of great pride and joy for all of us. Launching a ship requires great technical and design competency. It is the culmination of months of hard work in designing, planning, fabrication, production, installation, alignment, and is a source of encouragement for one and all. It is truly a matter of great pride for all those who are involved in bringing the ship to her present shape and getting her ready for launching. भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से इस अद्भुत अविश्वसनीय पोत का जलावतरण हो चुका है। ये ऐतिहासिक और स्वर्णिम पल हैं जिसके साक्षी बनने का गौरव आज हम सभी को प्राप्त हो रहा है। पोत को इसके वर्तमान स्वरूप में लाने और जलावतरण हेतु तैयार करने में शामिल सभी के लिए ये बेहद गर्व का विषय है। आज हम सभी गौरवान्वित हैं। भारत माता की जय! भारत माता की! भारत माता की! जय! भारत माता की! हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से पुनः सादर अनुरोध है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से पुनः सादर विनम्र अनुरोध कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।
it is our privilege to have the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, with us today. May I now request the Honorable President of India to address the August gathering on this occasion. We are going to witness the address by the Honorable President of India. Band may kindly go on a silent mode. The band may kindly go on a silent mode. Governor of West Bengal, Dr. C.V. Anand Bose ji, Chief Minister Ms. Mamata Banerjee, Raksha Rajya Mantri Sri Ajay Bhatt ji, Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar ji, CMD GRSC Commander Retired P.R. Hari ji, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am happy to be here at the launch of Vindhyagiri. This event marks a move forward in enhancing India's maritime capabilities. Vindhyagiri is also a step towards achieving the goal of Atmanirbhar Bharat through indigenous shipbuilding. I congratulate the Indian Navy and everyone involved in the design and construction of this ship. I am told that garden-rich shipbuilders and engineers have constructed and delivered more than 100 warships, including frigates like Vindhyagiri. Your skill and tireless efforts have brought us to this milestone. I appreciate the entire team at GRSC for its achievement. Project 17A of this, which Vindhyagiri is a part, reflects our commitment to self-reliance and technological advancement. This project demonstrates indigenous innovation for developing state-of-the-art technology. I have been informed that the multi-mission frigates of this series would be capable of dealing with all kinds of threats to our maritime interest. Ladies and gentlemen, this is my second visit to West Bengal as the President of India. The vibrant city of Kolkata, with its rich history and culture, holds a special place in the heart of our nation. Its intellectual vibrancy, artistic fervor, and the cosmopolitan spirit showcase the best of India. Kolkata's strategic location makes it vital for our naval preparedness, safeguarding our maritime interest and maintaining regional stability. The ship is aptly named after the Vindhya range, which have been a symbol of fortitude. I am confident that when this warship gets commissioned, it will symbolize the robustness of Vindhyas. Ladies and gentlemen, last year I was pleased to attend the Navy Day celebration in Visakhapatnam. There I had witnessed the operational demonstration by our brave Navy personnel. This year in March, I visited INS Vikrant in Kochi, where I interacted with the officers and sailors on board. The induction of indigenously built modern aircraft carrier INS Vikrant into the Indian Navy remains a proud moment for the nation. Today, India is the fifth largest economy in the world, and we are striving to become the third largest economy in the near future. A growing economy means higher volumes of trade. A huge part of our trade goods transit through the seas. This fact highlights the importance of oceans to our growth and well-being. The security in the Indian Ocean region and the larger Indo-Pacific has many aspects. It includes piracy, armed robbery, drug smuggling, illegal human migration, natural disasters, and several such issues. Against this backdrop, the Indian Navy has the mandate to protect,
preserve and promote India's maritime interests. The Navy has to always remain proactive in tackling security threats. As we witness the launch of this warship today, I once again congratulate the Indian Navy, the designers, and everyone involved in its construction and launch. I convey my best wishes to the Indian Navy in all its endeavor. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए हार्दिक धन्यवाद। देवी और सज्जनों, कार्यक्रम का अगला पड़ाव माई स्टैम्प के साथ स्पेशल कवर के विमोचन का है। अब हम भारत सरकार की एक्शन @75 थीम और मेक इन इंडिया पहल के तहत अमृतकाल में GRSC द्वारा निर्मित तीसरे P-17A फ्रिगेट के जलावतरण के महत्वपूर्ण अवसर पर माई स्टैम्प के साथ स्पेशल कवर के विमोचन के साक्षी बनने वाले हैं। मैं मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल श्री विधान चंद्र रॉय से सादर अनुरोध करता हूं कि वे कृपया आगे आएं और आज की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया को माई स्टैम्प के साथ विशेष कवर के विमोचन हेतु प्रथम एल्बम को सुपुर्द करें। Ladies and gentlemen, you are now requested to please rise for the national anthem. All ranks in uniform are requested to salute. देवी और सज्जनों, आप सभी से राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान के समक्ष खड़े होने एवं सभी वर्दीधारियों से सैल्यूट करने का अनुरोध है। राष्ट्रगान। सुबह है, हमारी आजादी का जश्न है। 76 वर्षों की शानदार यात्रा के बाद हम आज जहां आ पहुंचे हैं, वहां से भविष्य बड़ा उज्जवल दिखता है। आज हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सन 1947 में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया था। तब से हर साल स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की छटा अलग होती है। आज वही मौका है, वही शुभ अवसर है। अब से कुछ ही देर में भारत के प्रधानमंत्री यहां पधारेंगे, ध्वजारोहण करेंगे और फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
Namaskar and joyous Independence Day greetings. As you rise and shine this August morning, the historic Red Fort at Delhi gets ready to welcome the 15th of August 2023 with pride, patriotism, and promise. With national pride being the cornerstone of all Independence Day celebrations, it is with an enduring sense of deep reverence and respect that the largest democracy in the world celebrates its 77th Independence Day today. A day made possible by the sacrifice, discipline, and dedication of generations of freedom fighters. A day made special by the spirit, youth, and vibrancy of a young nation. A day made celebratory by the promise of a progressive tomorrow. And Red Fort here today, a picture of perfection and preparedness, waiting to resonate with the beats of our national anthem when Prime Minister Narendra Modi will arrive here to hoist the national flag and address the nation. आज अवसर है उन देशभक्तों को याद करने का जिनके संघर्षों, त्याग और बलिदान की बदौलत हम आजाद हो सके। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो अत्याचार, जो जुल्म स्वतंत्रता सेनानियों पर ढाए गए, वो किसी भी व्यक्ति के मनोबल को डिगा सकते थे, लेकिन इन देशभक्तों ने भारत को आजाद करने का जो सपना देखा था, उसके लिए हर कीमत चुकाने को वो तैयार थे। वो हंसते हंसते फांसी पर भी चढ़ गए। उनके मन में हमेशा यही विचार था कि आज नहीं तो कल उनका बलिदान रंग लाएगा, गुलामी की जंजीरें टूटेंगी, देश आजाद होगा। 15 अगस्त 1947 को यह सपना साकार हुआ। भारत अब दुनिया का एक आजाद देश है। भारत की अहमियत और हैसियत हर दिन बढ़ रही है। Every time we gather here to celebrate our Independence Day at the Red Fort, we are reminded that architecture has this wondrous ability to give meaning to form, the coming together of men, material, and mastery craft. And in this saga of what went into making us who we are and taking us to where we are today, some of the most inspiring stories are of people whom we have not even read about, silent revolutionaries, quiet workers, and strong rebels, men and women who broke norms, challenged social constructs, and led by example. Today, we salute all the sung and unsung heroes who gave patriotism true meaning. ये गौरव गाथा है भारत के उन अनगिनत नायकों की जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया। ये स्मरण है हिंद के शूरवीरों के उन साहसिक आंदोलनों का जिनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम से अंग्रेजों को पराजित कर भारत मां को आजादी दिलाई। परतंत्र भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था, बगावती तेवर थे और हर आंख में बस रहा था आजादी का सपना। इसी सपने को सच करने की शुरुआत थी 1857 की क्रांति। आजादी की इस पहली क्रांति में मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे शूरवीरों ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। राष्ट्र निर्माण की भावना और सबको संगठित करने के लक्ष्य के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आगे चलकर आजादी की लड़ाई में यह मील का पत्थर साबित हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। इसने आग में घी का काम किया।
त्रिमूर्ति लाल बाल पाल की रणनीति ने स्वतंत्रता संघर्ष में नई जान फूंक दी। 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन से स्वतंत्रता संघर्ष को नई स्फूर्ति मिली। समय के साथ एक तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के अनुपम प्रयोग से ब्रिटिश शासन को स्तब्ध कर दिया। नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेजों के मन माफिक शोषण से बचाने के लिए किए गए चंपारण सत्याग्रह ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। पहली बार आजादी की लड़ाई ने अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत को नजदीक से देखा और महसूस किया। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीयों को आक्रोशित कर दिया। लोगों में गुस्सा और विरोध बढ़ने लगा। यहीं से शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की, जिससे स्वदेशी की मांग जोर पकड़ने लगी और बढ़ने लगी अंग्रेजों की मुश्किलें। आजादी की लड़ाई को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से गति प्रदान की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की संगठन क्षमता और समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की रणनीति ने स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके अगले वर्ष ही गांधी जी ने नमक पर लगे कर के विरोध में दांडी मार्च किया। उन्होंने नमक कानून तोड़ते हुए कहा कि इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलने लगी। हिंद के नायकों का पराक्रम जारी था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त और अशफाकुल्ला खान जैसे क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और शहादत से युवा पीढ़ी को प्रेरित किया और अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ जनता को एकजुट किया। 1942-43 का समय, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ब्रिटिश शासन की मुश्किलें बढ़ा रही थी। फौज बनकर रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना, सुभाष का कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। तो वहीं देश में शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो के जज्बे से भरे इस आंदोलन में पूरे देश की भागीदारी रही। इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत को एहसास हो गया था कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन है। आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवादी कवि, लेखक, इतिहासकार और स्वतंत्रता संघर्ष के महानायक विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका अतुलनीय रही। उन्होंने अपनी रचनात्मक सोच, अपने लेखन और विचारों से जनमानस को संगठित कर मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया। बड़े आंदोलनों ने जहां स्वतंत्रता संघर्ष को मजबूती प्रदान की, वहीं क्षेत्रीय आंदोलन भी आजादी के लक्ष्य तक पहुंचने में मील का पत्थर साबित हुए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा क्रांति, रानी गाइदिन्ल्यू के मार्गदर्शन में नागा आंदोलन या फिर वीरता और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति रानी चेन्नम्मा का कित्तूर संघर्ष। ऐसी ही अनगिनत गाथाओं और आंदोलनों का गौरवपूर्ण परिणाम है 15 अगस्त 1947। भारत आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत में शान के साथ लहराया हमारा तिरंगा। The historic Red Fort, holding in its embrace an important part of India's history as it unfolded over time. And none of this, what we hold so dearly as a nation and are so proud of, would have been possible without the valiant efforts and sacrifice of all those who fought for freedom in this land. In fact, no other land in the world has harbored so many creeds since time immemorial. And today, we have evolved into a multifaceted nation whose character has different tones,
but the ultimate composition is forever one. And speaking of oneness, the single most visible symbolic representation of the nation's pride has, since time immemorial, always been the national flag, our tricolor, the Tiranga, holding in its symbolism the calm and courage of valor and sacrifice, and the benign and gentle gaze of peace, and our strong, proud connect with the earth, the fountainhead of all prosperity, flutters proudly in our homes, hopes, and hearts. भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह 77वां स्वतंत्रता दिवस, प्रमुख आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किला, जिस पर शान से लहराता हुआ हमारा तिरंगा, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा। भारतीयता पर हमें है गर्व, मिलकर मनाएं स्वाधीनता का पर्व। ये तिरंगा केवल 3 रंग का वस्त्र नहीं है, हमारा ध्वज देश की शान है, आन है, बान है, हर भारतीय के दिल का स्वाभिमान है। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता हुआ नजर आता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों की आन, बान और शान। राष्ट्रीय ध्वज के इस स्वरूप तक आने का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा। राष्ट्रीय ध्वज हमेशा से ही स्वतंत्रता आंदोलन का एक अभिन्न अंग रहा। पहला राष्ट्रीय ध्वज